Okay, good evening, everybody. So we have to just finish the last portion of that electric potential concept. Okay, and then we will be free to move ahead with the Laplace equation and other concepts. And before that, we will little bit do conductors and dielectrics in between. We will be doing that. Okay. So the overall, you can say the picture is very much clear to you right now that what are the steps to calculate different quantities. But potentials में हमें थोड़ी सी और problems करनी चाहिए. तो आज हम लोग let us solve the problems together. It will not be like just giving the lecture, but we will be doing problems all, together. Okay. So I'll be taking few problems and we'll solve it together. The first problem is like this. Let us solve it quickly. सभी लोग solve करेंगे एक साथ. So first problem is very simple. Plus Q charge is here and plus Q charge is here. And I want to know what will be the potential at P, okay, which is at Z distance. So very simple question. दो positive charge हैं and Z distance पे we have to calculate the potential. What does it mean? We have to calculate Vz. What does it mean? Actually, we can only calculate potential difference. ये बता चुका हूं ना मैं. But because at infinity, the potential will be 0. So that's why I can say this will be equal to Vz. Okay? V at Z, or you can write Vp, whatever you want to write. So at this point, clear? So let us write the potential here. It is very simple. What will be the potential here? Vz. It is a scalar quantity, no problem. So this distance was suppose equal to d. Okay, this distance was d. So what is the potential? Potential is just kq by r, right? This is r, kq by r. So this is r. So it will be 1 by 4 pi epsilon naught q by r. And for this also it will be same, right? So into 2. Is this okay? So what will be the value of r? It will be under root of z square plus, बोलो भाई, d square by 4. Z square plus d square by Pythagoras theorem, right? So the potential will be given by, कितना हो जाएगा? 2 into 1 by 4 pi epsilon naught q by under root of z square plus d square by 4. This will be the potential at point Z. V at Z, and this is Vp actually. If you want to mark the point, the potential is at point P. ठीक है ना भाई? Okay? Are you listening? आवाज आ रही है? Yes? Yes, sir. Okay. Okay. So now from this, because we have learned the formalism, I can calculate the value of electric field also at this point, because potential and field are related. So let us get the electric field. That will be equal to minus del of potential, right? This will be the field. Now you can see कि ये सिर्फ z का फंक्शन है. So जो del में लिखोगे only z will be relevant. बाकी सबके
टर्म में तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो इट विल बिकम माइनस z कैप del by del z, okay, into 2 into 1 by 4 pi epsilon naught q by root of z square plus d square by 4. और आपके लिए ये कूलम्स लॉ से निकालना भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मुश्किल बात नहीं है. तो यहां के बाद जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड एंड यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. ओके, इज दिस ओके? सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will come out of this, and this I am giving you as a homework because ये तो हम कर ही चुके हैं. Because of 2 point charges, to calculate field, you know field will be in this direction, it will be in this direction, cosine component will add up, sine component will cancel. Yes or no? We can do it easily by Coulomb's law also. But ये जो formalism है इसके help से भी आप करो और फिर Coulomb's law से करो और दोनों को check करो. Check with Coulomb's law also. The answer. Check with Coulomb's law. तो आज इस टाइप से कई क्वेश्चंस कवर करते हैं और साथ साथ आपको होमवर्क देता जाता हूं. ओके, इज दिस ओके? समझ आ गई बात सबको? यस सर. ओके, थक गए क्या भाई बहुत? आप लोग बिल्कुल चुप चुप हो. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्लियर है? सबने होमवर्क लिख लिया ना? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं इसमें. तो आज हम लोग पूरी तरीके से पोटेंशियल सीख जाएंगे हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज that again I am taking the same problems which we have already done, but not for potential. Please see this now. Suppose you have a length like this which carries a uniform charge density lambda. Okay, this carries a uniform charge density lambda and you want to calculate potential at point P, right? अब मुझे यहां पे पोटेंशियल निकालना है और आपको पता चल चुका होगा कि ये हम पहले भी कर चुके हैं. हम इसके लिए फील्ड निकाल चुके हैं. याद है या नहीं याद है? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड फॉर दिस सिस्टम. ओके, तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो वेरीफाई भी हो जाएंगे. दिस इज एट डिस्टेंस z. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट अ पोटेंशियल व्हिच इज स्केलर क्वांटिटी. अगेन टेक स्मॉल length. So let this length is x. So this will be dx, and because of this, so this is dq charge which is lambda dx, and because of this the potential at this point will be given by vp. कितना होगा? अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो ले रहे हैं, ऑब्वियसली v at infinity we are taking equal to 0, that is the reference point. So कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught, okay, integral dq कितना होगा? lambda dx over this r, right? And what is r? Under root of z square plus r square. ठीक है ना? Is this okay? And the potential will be written for minus L to L. x कहां से कहां vary करेगा? It will go from minus L to L. This will be the potential. Z Right? square plus x square, sir. Z square plus x square. Yes. Okay. So r is equal to root of z square plus x square. So this is the potential. So let us integrate it. So now tell me, what is integral of dx by root of x square plus a square? Tell me. This integral is what? Log 1 of upon 8 inverse. sorry, log of x plus root of x square plus a square. यही तो हो जाता है.
Yes or no? The integral dx by root of x square plus a square is what? Log of x plus root of x square plus a square, correct? And this is also even function in x. So this you can write as even function होने की वजह से you can write it as 2 times 1 by 4 pi epsilon naught, and lambda also will come out, no problem. And integral will become from 0 to L now, and it will become log of, bolo bhai, x plus root x square plus z square 0 to L, correct? मैंने एक बार ये होमवर्क भी दिया था, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, किसी को आइडिया है? पुट x is equal to a tan theta, you can easily solve. Yes? So, ये आपको होमवर्क में करना चाहिए so that you get confident about it. So what will this become now? VP will become 2 into lambda by 4 pi epsilon naught, and let us put the upper limit minus lower limit. So upper limit will be ln L plus root L square plus Z square minus ln Z. So this will be your potential. You can write it in a better way. It will become 2 into lambda by 4 pi epsilon naught. बोलो भाई कैसे लिख सकते हैं? ln L plus root L square plus Z square by Z. Yes, this is the potential. ठीक है, अभी आपको याद है मैंने यहां पे फील्ड आपसे कैलकुलेट करवा चुका हूं मैं. यस, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड. सो कैसे करें? फिर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है. सो मैं फील्ड निकाल सकता हूं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी. यहां पे भी वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ Z. ओके, सो माइनस Z कैप डेल बाय डेल Z. अगर आपने VP कर दिया तो EP फील्ड वेक्टर के साथ आ जाएगी, और वो फॉर्मूला आप मैच कर लोगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड फॉर सच अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. याद आया? इज दिस ओके? तो हर टाइप की प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. सो कैन आई रेज दिस? नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Okay. So this is homework again. Get this value and check it with our electric field expression जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है. ओके, सो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई हमारे पोटेंशियल निकालने की. ओके, नाउ द थर्ड वन. थर्ड प्रॉब्लम इज लाइक दिस. You have a disk and you want to calculate potential here, right? At this point, which is Z, distance above. अब पोटेंशियल के स्केलर होने की वजह से देखो कितने आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, because we don't have to look for directions, right? So that is the benefit of formulation. तभी तो समझ आता है इस फॉर्मुलेशन का फायदा क्या है. तो अभी देखो क्या करेंगे. मुझे यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो आई विल टेक simply a ring. So this is actually a plain sheet. So I will just take a small ring like this at distance say x. Okay, little thick because dx thickness will also I will be taking. अभी देखो, इससे यहां पे कोई भी चार्ज अगर dq 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 चार्ज फैला हुआ है, तो सबकी वजह से the potential will be same, that will be actually added up.
So I can write the small potential because of this ring. Because of this ring, I can write a small potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq by r hota hai na? So what is dq here? Anybody? Lambda into 2 pi x. So here it is sigma na? So what is dq here? Sigma into 2 pi x into dx, because dx is the thickness. Are you understanding? So by r, by this distance r, which is what? What is this distance? Under root of z square plus x square. So this is the potential. Please see, इसको जरा let us try to imagine. ये रिंग के ऊपर जब आप मूव करोगे तो ये r डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला. इट इज स्लैंट हाइट ऑफ द कोन ना, दैट विल नॉट चेंज. सो हर जगह ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए इस पूरे की वजह से जो चार्ज है वो तुमने लिख दिया, और उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला यू हैव अप्लाइड. v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq by r. I have applied the simple formula. v is equal to kq by r. Can you see that? Okay. Now अगर मैं इस x के डिस्टेंस को 0 से लेके और इसके रेडियस कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दूं तो I will get the complete potential. Correct? So V will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught integral 0 to R into sigma 2 pi x dx by under root of z square plus x square. Correct? And इसको कैसे मैनेज करें? अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही इजी है. This will become 2 and let us try to manage this. So V at P, potential at P, and again don't forget that I am taking potential at infinity is equal to 0. Okay, because I can take. So this is कितना हो जाएगा? Sigma by 2 epsilon naught. What we will get here? इसको कैसे मैनेज करें भाई? So I will take z square plus x square is equal to t square. So x dx will be equal to dt, t dt. Correct? So this will become 0 to r. I mean limit में वापस change कर लूंगा. Don't worry about that. So this will become t and x dx will become, so t and t will cancel na? It will only become dt, right? So it will become sigma over 2 epsilon naught, and this will become t, which is what? Root of z square plus x square 0 to r. So this potential will become sigma over 2 epsilon naught, and put this value, upper limit, root of z square plus r square minus the lower limit z. This is the answer. This is the potential. Is this okay? Now again you have homework, and in all homeworks only partial derivative is involved. So I hope that you will be able to do this. So if I want electric field at P, this is your homework. If I want electric field at P, I can simply write minus del V P, and we will correlate because plain इस sheet की वजह से we have already calculated the इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वहां से वो फॉर्मूला हमारा मैच हो जाएगा, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे. इज दिस ओके? Okay for everybody? Yes, sir. Okay. So going forward, a very nice question has come now to clear your concepts of calculus also.
So okay. Now in next question, this is very interesting. Please see it carefully. In next question, I have a cone which is like this. Okay. And this point of the cone, suppose these are the axes. This is point A, and this is suppose on the top, this is point B. Okay. Point A and point B. And this cone is suppose hollow cone. It is hollow. So what type of charge density will come here? अगर ये hollow है तो किस type की charge density आएगी? Surface. On the surface, so charge density is given sigma. और आपको निकालना है, you have to calculate what is the potential difference between VA and VB. That you have to calculate. Okay, this is the question. So let us understand all the things. VA भी निकालेंगे, VB भी निकालेंगे, and we have to only remain on the surface. So that's why no problem. And fortunately, some dimensions are given. This radius is also h and this height is also h. That means this angle is 45 degree. Okay. This is given in the question itself, or you can take theta if you do. If in general अगर पूछा जाएगा तो हम theta ले लेंगे. So पहली बात ये है, system and question is absolutely clear to everyone. There is a cone. It has got surface charge density. So because of this charge density, जब भी charge density दी जाए, समझने के लिए एक छोटा सा चार्ज ले लो यहाँ पे dq. तो इस dq की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा ना? If potential at infinity is 0, this is also a small object. We can take potential at infinity is equal to 0. So for this charge, there is a potential, yes or no? इसी तरीके के सारे potential add कर देने हैं यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे भी potential होगा. So I hope that this is clear. So we will take a small ring like this to write the potential here, because we have to move on the surface. So I can take this point, and I will take a small charge, suppose here, and I will write a potential here, and then I will integrate to get this. So देखो जरा ध्यान से. So this distance I can take any variable I want, I can take. So मैं क्या करूंगा कि I will first of all write at A the potential is. कोई contribute करना चाहेगा? Anybody would like to contribute? What will be the potential because of this? सोच के बताओ. What will be the potential because of this ring? Yes. बोलो. I can take this distance as y and this distance as dy. Okay, that length will be required, na? Yes or no? Because of the sigma, it should be a ring, na? So what will be the potential? बताओ. Small potential first of all. At A पहले मैं निकाल रहा हूं. So let us get the small potential. कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught sigma into dA पे R dq लिखना है, dq लिखना है. So sigma sigma into R dy. so Small radius. this radius will be required, right? This radius will be required. So
let us write that radius. How much will be that radius? Small r. Small r or anything. इसको किससे denote कर लूं? Okay, we will denote it by small r. So it will be 2 pi r and dy. dy. सब लोग ध्यान से देखो, ये समझ पा रहे हो या नहीं? This is very important. So this ring is like this. A small cylinder. This is dy and this radius is r. So that's why the curved surface area, this becomes 2 pi r into dy. Correct? And what is the distance of the charge? Y. Y. So this will be y. अब हमारा जॉब है r को किसके टर्म में लिख देना? भाई Y ये की term. y के टर्म में. तो जरा देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से. You have a triangle like this in which this angle is 45 degree, this is y and this is r. So this is perpendicular, this is hypotenuse. What is sine 45? बोलो. R by y. So what is r? It is y by under root 2. Correct है? R in terms of y. So your dv will become 1 by 4 pi epsilon naught into 1 by root 2 into sigma into 2 pi and integral. This will become, bolo bhai, what will be y? Y and y will cancel. Yes? Yes, sir. And it will only become dy. Correct? And now the thing is, what is limit of this y? So limit of y will start from 0 and it will go all over this. Yes? And what is this distance? This is so simple to calculate. Under root of h square plus h square, that means root 2h. So it will become root 2h. Right? So this will become, अब जरा cut करना शुरू कर दो. This will become 2, right? And this will become sigma over 2 root 2 into, what will be this? Root 2h. So root 2 and root 2 cancel. कोई term बच तो नहीं रहा? Epsilon naught. What will be this? Sigma h over 2 epsilon naught. This will be the answer. एक बार ध्यान से देखो, कहीं नहीं समझ आ रहा है तो पूछो. देखो एक क्वेश्चन से आपका पूरा कैलकुलस सब कुछ क्लियर हो जाता है. If you see it very, very carefully. Yes or no? You believe in this or not? आवाज नहीं आ रही आपकी. Yes, sir. Yes. So any problem in any step? I have just used whatever I have taught you. तो ये जो रिंग है, ये रिंग जब सबसे नीचे होगी तो y 0 होगा, और ये रिंग जब सबसे ऊपर चली जाएगी तो इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 2h हो जाएगी. तो वही लिमिट में पुट कर दिया. यस? एक्सक्यूज मी सर. यस यस. सर हमने सिग्मा क्यों लिया, लैम्डा क्यों नहीं लिया? अरे ये कर्व्ड सरफेस है ना, लाइन के लिए. सर तो हम ये गिवन है भाई. दिस इज गिवन. ओके सर. भाई, सर this is- एक्चुअली अगर गिवन नहीं होता तो लैम्डा ले सकते थे नहीं कि ले हम सकते छोटा सा क्योंकि एरिया. ना 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 ना, एरिया कितना भी छोटा हो है तो एरिया ना. सर मतलब वो dy जो है वो एक रिंग की तरह हो गया ना. रिंग की तरह हो गया, बट उसकी थिकनेस dy है. ओके सर तो समझ. समझ रहे हो ना? तो ये देखो हाँ. डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा.
ये है एरिया, ध्यान से समझो। सो जो dq है वो तुम लिख सकते हो लैम्डा dx सिग्मा dA and rho dv d tau. So this is length, this is charge per unit length, this is area, this is charge per unit area, this is volume, this is charge. So that then only the product will become charge, na? Otherwise it will not become, right? Yes, sir. Okay. So it is very, very important that, सर yes, सर ये पोटेंशियल अभी सिर्फ हम लोग ने एट पॉइंट ए के लिए ही निकाला है ना? अभी A के लिए निकाला है, फिर B के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो ओके सर। आपको अगर A के लिए पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज KQ/R, तो जितने भी स्मॉल चार्जेस प्रेजेंट हैं इस पूरे सरफेस पे सबको बाय R कर लिया एक तरीके से बाय दिस फॉर्मूला। तो हमने A पे पोटेंशियल, अब ऐसे ही B पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। ओके, यस सर। और किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस? मैं चाहता हूं कि ये नोट कर लेना जरा, दिस इज पोटेंशियल एट ए। अब आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आ सकता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए। ये हो गया पार्ट खत्म। दिस कैन बी अ 5 मार्क क्वेश्चन, ओके, बट लेट अस मूव अहेड। हमें थोड़ा बी पे भी निकालना है। अब मुझे कौन सजेस्ट करेगा, देखें जरा, अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है कि नहीं कैलकुलस में? somebody suggest me. I want to write potential at B. So इसी चार्ज की डिस्टेंस कितनी ले लूं मैं? इस डिस्टेंस को कुछ ले लेता हूं, लेट मी टेक एट एज R। बोलो भाई, आप लोग R में कंफ्यूज मत हो जाना, आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं इसको B ले लेता हूं डिस्टेंस को, ये पॉइंट B है, डोंट वरी, दिस डिस्टेंस इज B। ओके, इज दिस ओके? बिकॉज चार्ज से मुझे डिस्टेंस चाहिए ना। ओके, सो वी बी क्या हो जाएगा नाउ? एट बी सजेस्ट समबडी, स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा? ध्रुवी, कैन यू टेल मी? सर सिग्मा 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught sigma sigma 2 pi r 2 pi r dy divided by by सर h square plus नॉट स्क्वायर का अंडर रूट। how by which distance? बस तुम ये बता दो मुझे, मैं देखूं तुम ये समझ पा रहे हो कि नहीं कि dv is equal to kq by r में r क्या है? What is this r? बताओ, tell me what is this r? सर वो जो लाइनें ड्रॉ करी थी बाद में, ये, because that is, this r is what? Distance between charge and the point where you want to calculate the potential, right? यस सर। So what is that? This is the charge and this is the point where I want to calculate the potential. So this distance, so that means by B. इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ आ रहा है फिर से पूछ लो भाई। in this formula the potential due to this charge dq at P is kq by r. What is this r? Distance between charge and the point. So charge is here and the point is here. So what will be that? It will be B, yes. हाँ, अब हम किसी तरह से B को वापस Y के टर्म में लिख दें और Y वाली ही लिमिट रख दें, यही तो इंटेलिजेंस है। Somehow to write B in terms of Y. So please see, not a big deal. Let me separate it to make it a very simple thing. ये देखो, this is H, this is B, this is 45 degree and this is Y. यही तो है, बोलो। What sir. cosine law suggests? B square is H square plus Y square minus 2 HY cos of 45 degree. So it will become H square plus Y square minus 2. What will be this? Root 2
एच वाई। देखो भाई, yes or no? And what will be b? Tell me. Root of this. What is this? This is cosine law. अलग से पढ़ाने पे cosine law कोई फायदा नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और आप लगा पाओ तो ही फायदा है। Then only you have benefit. Is this okay? Dolo, is this okay? Yes, sir. Now we have got this. Substitute this small dv. Now small dv will be b will be substituted here, right? So let me just erase this. ये नोट कर लिया ना सबने b की वैल्यू को. I will just substitute b here. What is the value of b? It is root of h square plus y square minus root 2 hy. This is the value. Correct? Now, I don't think there is any problem in VB now, because that will be 1 by 4 pi epsilon naught. Yes? R को और लिखना पड़ेगा ना अभी भी. R को y के टर्म में हम लिख चुके हैं ना पहले भी. What was that? y by root 2. R is equal to y by Y by root 2. root 2. So I will write it again. It will become 1 by root 2 sigma 2 pi and integral y dy. अब देखो ये मैथमेटिक्स की चीज हो गई अब. By under root of h square plus y square minus root 2 hy, and limit of y is 0 to, yes, root 2 h. This is the integral that we have to manage. अब ये इंटीग्रल कैसे किया जाए, कोई सजेस्ट कर सकता है? How to do this integral? Make it square. Make it square. You mean perfect square? Yes. No, I think it will not become a perfect square. You will have to write this h square plus y square minus this as some t square, right? ठीक है? So this integral, अगर मान लो कहीं इंटीग्रल आ जाए तुम्हारे पास x dx by root of, I mean y ही लिख देता हूं, y dy and root of h square plus y square minus root 2 hy. This is what? अब देखो ऐसी चीजों पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए अलग से. This is homework. How to solve this integral? So I suggest you to put this as t square, then try to write the numerator in the form of the derivative. कुछ कम पड़ रहा हो तो add और subtract कर देना and then try to solve it. Okay? Okay. तो अभी ये एक होमवर्क होगा और इसके आगे वाली चीज मैं लिख देता हूं एंड ये आप लोग करके कोरिलेट कर लेना कि व्हाट वी विल बी गेटिंग. ओके, सो व्हाट इज दिस? This I will get as VB is equal to, after the integration and you will substitute the limit, you will get sigma h by 2 epsilon naught ln of 1 plus root 2. This we will get. And अगर तुम इंटीग्रल देखना चाहते हो कि what will be that integral, this integral, so VB will be equal to sigma by 2 root 2 epsilon naught, and it will be root of h square plus a square, I mean h square plus मैंने क्या लिया है y square
h square plus y square minus root 2 h a plus h by root 2 log of 2 फिर से root of h square plus y square minus root 2 h a. This will look little weird because आपको इसको अपने आप करना चाहिए तभी ये सही लगेगा. Plus 2, I mean this is y. Okay, y plus 2y minus root 2 h. This will be the integral and it will be integrated from 0 to root 2 h. So this is little complicated integral. Not very complicated, but actually you will, आपने class 12th वगैरह में ये सब खूब किया हुआ है. This is not a big integral for class 12th, right? So ये कर लोगे सभी लोग homework में? When you will solve this, you will get this integral, okay? बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि outside we have 2 pi 2. So 2 root 2. 2 root 2 is here and epsilon naught is here, okay? The inside is this integral value that we are getting. तो जब ये integrate करोगे तो this you will get and ये सारा log के अंदर ही है, ठीक है? This all is inside the log. Log of this plus this inside the log. And limit is from 0 to root 2h. So this is finished. VB आ गया, VA आ गया. Minus करके लिख लो. This is VB and VA. You can subtract VA minus VB. समझ आ गया? तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा सकता है जस्ट कि VA बताओ. उतने में ही आपको सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी कि आपको कितना नॉलेज है. Yes? And this integral, please, everybody will do and post it on the group. इसी छोटी छोटी चीजों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू सॉल्व. ठीक है? ओके. इसमें किसी को डाउट? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है भाई इतना? ओके, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? वेरी गुड. सो दिस वाज योर पोटेंशियल थिंग जो हम इतने टाइम से हम लोग करते आ रहे थे. नाउ almost we have done every question that was required for your potential thing, okay? And now I want to tell you कि अभी हम कहां पहुंच गए हैं. अभी what are the major quantities that we are dealing with? कोई बता सकता है? शुरुआत हमने कहां से करी? इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर कहां है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और हर चीज को हमने किसके टर्म में लिखा बताओ? चार्ज डेंसिटी. वर्क. Charge density. Okay, potential means work. Potential means work for unit potential and work. We will now, if you see the whole thing, this is a very famous figure that is in Griffith. Now you can make it by yourself, no problem. So I am writing sigma here and potential here and electric field here. Okay, now अभी देखते जाओ जरा. Field और potential इसको किस तरह से हम रिलेट करेंगे and how I will relate everything. So एक एक करके देखते हैं. So if I draw it like this, from potential we get electric field and this as this and this. First of all, let us understand this much. अगर मुझे potential से field निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? अभी बताया था. E will become minus delta phi. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो देन phi is बोलो माइनस इंटीग्रल
E dot d. E dot dr or dl, whatever. Yes, ये clear है? Yes, sir. So suppose I want to get phi से charge density लिखनी हो, then what you will do? बताओ. You have to write using potential. You have to write charge density. Differential form of Gauss law. So phi square del square phi is equal to minus rho by epsilon naught, right? By what is del dot E? Tell me. Rho by epsilon naught. And E is minus del phi. So when you substitute it here, you will get del square phi is minus rho by epsilon naught, which is nothing but Poisson equation. Yes or no? This is Poisson equation. So when you want to write from potential, you want to write this charge density. So operate del square on it, you will get charge density. Or agar suppose I want to write this, I want to write potential using charge density, then which law? Coulomb's law. So phi is, कोई बता सकता है? 1 by 4 pi epsilon naught integral rho d tau by r. Yes or no? Field to charge density. बताओ. How to write field to charge density? Which law? Gauss law. Gauss law. Tell me how to write. Del dot E Rho is by equal epsilon. to rho by epsilon naught. And this E dot d is equal to Q enclosed by epsilon naught. from rho to this. How to write? Which E law? dot d is No. That is not. From directly rho. How to write? Coulomb's law, bhai. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught integral rho d tau by r square. Yes or no? So this is the complete picture of what we have done. और इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग पे बोझ पड़ रहा है. I think naturally we know all these things. Yes or no? Till now, whatever we have done, we know it naturally. बोलो भाई. Yes or no? yes sir. So अगर इतनी सारी चीजें दिमाग में हैं तो ही फिर आप आगे बढ़ पाओगे. इसमें कोई confusion हो fundamentally तो feel free to ask if there is any confusion. किसी भी चीज को लेके if there is any confusion, and please see if there is no charge density, I mean charge free region is there is no charge, then phi square del square phi will become 0, and this is Laplace equation. Okay, and आपको ये पता है कि E is equal to minus del phi is also from del cross E is equal to 0, right? So electrostatic field का nature ऐसा होना चाहिए. Electrostatic field का nature ऐसा होना चाहिए. So this is the whole story that I wanted to tell you. So एक पूरा का पूरा sequence हम लोगों ने कर दिया है और आपने रिवीजन थोड़ा सा कर लिया है और अब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है आपके तरफ से. आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पहले एक छोटा सा टेस्ट दे दोगे, मैं कल फ्लोट करवा दे रहा हूँ, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल 100% कंफर्टेबल हो जाओगे. सो एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. इसको याद नहीं करना है, याद किया तो बेकार हो गया. There is no point of remembering it because this all should come naturally to us because we have been doing it. Na? Field निकाला, potential निकाला,
फील्ड से पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल से फील्ड निकाला. वी आर डूइंग विद द न्यूमेरिकल्स. we have applied Gauss law, we have applied everything. So that means ये सारा, now we inherit this. We don't have to remember anything. We know all this, right? Is this okay? सर Yeah. टेस्ट अभी होगा या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद? नहीं, पहले तो एक छोटा सा टेस्ट दे दो, सिंपल क्वेश्चंस डालें, ठीक है? और वो टेस्ट बार बार आपको देना है. टेस्ट इज नॉट फॉर एनी जजमेंट. टेस्ट इज कि आप लर्न करो, उसको एक बार दो, 2 बार दो, इंप्रूव योर मार्क्स. ओके, ठीक है? पहले जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उसके बेसिस पे यू कैन परफॉर्म टेस्ट. नो एक्स्ट्रा रीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट इन दिस डोमेन. ओके, ठीक है? चलो, सो अब आपको समझ आ गया होगा कि नाउ we will move little bit towards boundary values, boundary conditions, and then conductors and dielectrics, and then special techniques which is Laplace equation and all that. ठीक है? तो ये काफी, अगर आप जितने क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं अगर उसको ईमानदारी के साथ आप कर लो एंड डू ऑल द होमवर्क्स, सो ये पार्ट आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाला. ओके, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you.